क्या जी स्टार्ट कर सकते हैं क्या? Yes. Apologies for the delay. There was some technical glitch, so we can start now. Okay. A very good evening everyone. मेरा नाम समीर कुमार है और आज का होस्ट मैं हूँ इस मार्केट आउटलुक वेबिनार के सेशन के लिए। आज का जो मार्केट आउटलुक वेबिनार है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हमारे बहुत सारे इन्वेस्टर ने हमें आग्रह किया था कि इस बार का जो आप वेबिनार करेंगे समीर जी, आपकी टीम करेगी, तो प्लीज आप ये जो मार्केट पे जो नॉइज है आपका टैरिफ को लेकर के, इंडियन इकोनॉमी को लेकर के, वो जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन को लेकर के जो नॉइज है, आप लोग प्लीज इसे एड्रेस कीजिएगा। तो मैं बहुत खुश हूँ कि ये रिक्वेस्ट मैंने अपने फाउंडर और सीईओ मिस्टर विकास अग्रवाल जी के पास रखा था और उन्होंने बोला कि जरूर हम इस चीज को डिकोड करेंगे सभी अपने इन्वेस्टर के सामने कि इसको आप किस रूप में देख सकते हैं और आने वाले समय में मार्केट किस तरह से इन चीजों के ऊपर अपना रिएक्शन दे सकता है। तो बिना समय गंवाए हुए और एक बार आप सभी से माफी मांगते हुए कि 10 मिनट का लेट हो गया, कुछ टेक्निकल ग्लिचेस आ गई थी, तो इसके लिए मैं सभी से एक बार माफी मांगता हूँ। ये 10 मिनट का डिले हमारे कारण हुआ है और बिना समय गंवाए हुए मैं अपने फाउंडर और सीईओ मिस्टर विकास अग्रवाल जी से आग्रह करता हूँ कि आप ये सेशन स्टार्ट करें। ओवर टू विकास जी। Thank you. Apologies for the delay. Without any further ado, let's start the conversation. I'll share my screen. Just let me know if you can see my screen. देखिए, thank you Sameer ji. You know, every month we are doing this market outlook for almost now 7 months, and what we'll do is we'll share some important data points, and then we leave it on the wisdom of our investors to take a call in terms of how do they want to go ahead. We will certainly share our views on the market. So as the picture clearly indicates, it's a war going on between bull and bear. So we'll try and decode what's happening in the markets. Like what I thought is that, while doing the research, we thought we'll do some kind of analysis in terms of which are the asset classes which are performing at the moment, and historically how has been the performance of each of the asset classes. So we looked at overall different asset classes. For example, we have now almost 10 years of data points, and source is NSE, National Stock Exchange. इसमें देखा हमने 2015 से 2025 तक अलग अलग एसेट क्लास का रिटर्न निकालने का कोशिश की हमने। इसमें बिटकॉइन के रिटर्न्स हमने डाले, नैस्डैक के डाले, एसएससी कॉम डाला, S&P 500 का डेटा डाला, रशिया, निफ्टी, अलग अलग कंट्रीज का, MSCI वर्ल्ड, मतलब जितना हो सका हमने कोशिश की। MSCI इंडेक्स इमर्जिंग मार्केट का, क्रूड का, अलग अलग एसेट क्लास का हिस्टोरिकल रिटर्न क्या है। तो इसमें देखने को मिला कि निफ्टी अगर आप देखते हैं, निफ्टी 500, 2015 में निफ्टी 500 has delivered only 0.02% return. Let's look at next year. Next year Nifty 500 has delivered 5% return. Then उसके बाद very next year Nifty has delivered 37% returns. And during these 3 years, Bitcoin has delivered 34%, 122%, and in 2017 it delivered 1394% of absolute return in that particular year. Well, as an organization, we do not track Bitcoin, and I would say that these were accidental returns which came out of Bitcoin, because that asset class do not have any underlying. But the reliable indexes like Nifty, or look at Nasdaq also for that matter. So Nasdaq continuously and consistently has delivered about 10% CAGR, whereas Nifty 500, when you look at, so I've been talking about 2015. So 2015 may delivered 0.02. Then it delivered 5%. In 2016, 2017, it delivered 37%. In 2018, Nifty delivered 4.6%. And in 2018, Nifty 500 delivered -2% returns.
And if you look at Nifty 50, so Nifty 50 has delivered 2000% return in 2017. It delivered 4.6% in 2018. Let's look at only Nifty 50. It delivered 13.5% in 2019. Then it delivered 16% return in 2020. Then it delivered to 25% in 2021. Then it delivered 5% in 2022. That was the year when you had a lot of FBI started taking the money out from Indian markets. Then 2023 delivered 21%. Then in 2024 it delivered 10%. And in 2025, so far, this is about 6% as we speak. So this clearly indicates that Nifty delivers double-digit returns if you have 5 years and above horizon. But in 1 year or 2 years, it is highly unpredictable, and it can deliver 2 to 3% or 5% negative returns also. So, for example, Nifty 50 in 2015 delivered minus 3% returns. So it can happen. So हर एक एसेट क्लास की एक अलग इम्पोर्टेंस है, एक अलग उसकी उसका जो पोर्टफोलियो में स्थान है, तो इस हिसाब से एसेट एलोकेशन होना चाहिए कि वो आपका बैलेंस रिटर्न बने. दिस इज व्हाट वी बिलीव. Let's look at the index performance. So last 1 year has been a roller coaster ride. Nifty 50, Nifty 100, 200. I mean, all of them either are at negligible performance or they have delivered negative returns in the last 1 year, including small cap and mid cap. So last 1 year has been a roller coaster ride for our markets. Now let's look at some of the other indices. So Nifty Auto, whereas has delivered positive return of 19%. Banks have delivered positive return of almost 4.5%. Consumer durable is positive by 9%. FMCG is positive about 19%. Healthcare is delivered 21%. IT is delivered 22%. Metal is 17%. Nifty Pharma is down by 14%. And Nifty Realty is down by 7%. But when you look at their 3 years and 5 years, in 3 years, most of them have delivered about 15%, the major indexes. And here the sectorial indexes has also delivered about 15% and above returns. Some of them have surprised us with 35% returns also. A big question is that, so this presentation is divided in 2 parts. One will cover try and cover what's happening globally, and then we'll come to what's happening in India, particularly, especially during this tariff war. तो सबसे पहले तो ये देखना है कि जो टैरिफ वॉर का जो इफेक्ट है वो यूएस में इसका क्या इफेक्ट आएगा. तो हमने स्टडी किया एंड उसमें अगले 1 से 2 साल में ऐसा एक्सपेक्टेड है कि यूएस बिकॉज ऑफ द यूएस टैरिफ, तो जीडीपी जो है यूएस का that will go down by 0.5%. And you know that their growth rate is, it is half of what the way India is growing. And उसमें 0.5% कम होना बहुत बड़ी बात है. So they will have a hit of 0.5% in 2025 and also in 2016 to 26. And also, there is an organization in US and they have done the study, and they say that over the period of next 10 years, the GDP will degrow by 0.38% in the US. So because of this tariff issue, US is the biggest loser as far as their growth rate is concerned. 2025 tariff imply an increase in consumer prices by 1.8% in the short run. So आप देख रहे हैं कि वहां पे जो लोगों के ऊपर में जो इसका इम्पैक्ट आएगा हाउस होल्ड लेवल पे, जो वहां पे इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है, जो उसका कॉस्ट उन्हें देना पड़ेगा,
उसका जो हिट आएगा that is expected at about $2,400 per household. That's the kind of impact US is going to have. So the ongoing trade deadlock is likely to have a more adverse impact on the US than on India. And I'll explain that in the next slide, how it is going to be. So due to America's relative lower GDP growth vis-a-vis India, which is growing at 6.5%, and elevated inflation and a weakening dollar, all put together is putting US in even more difficult situation. We've done some more study in terms of इंडिया में क्या इफेक्ट आएगा, कितना परसेंट हमारा एक्सपोर्ट है. सो एक्सपोर्ट्स क्या होता है, दो भागों में उसे देखा जाता है. पहला गुड्स का कितना एक्सपोर्ट है और सर्विसेज का कितना एक्सपोर्ट है, और उसका परसेंटेज क्या है जीडीपी का, कितना परसेंट है. तो देखिए यूएस कंट्रीज आर मोस्टली 50% of them, their overall GDP is dependent on exports. In case of Germany, they are dependent on exports by 42% of their growth, and despite they have a lower growth. UK is about 30%, Canada is about 32%, whereas India, our export dependency is only 21%. So अगर globally हम देखते हैं तो relatively we are much lower. I mean, we are nowhere in terms of the global supply chain, and our contribution is, I mean, our dependency is only 21%. तो आप अगर जीडीपी का कंस्ट्रक्ट देखते हैं तो इंडिया एज अ कंट्री, our dependency on export of goods and services is only 21%. अच्छा, next slide में देखते हैं. And on that 21%, let's look at what is US. On that 20%, our US export is about 20%. So first of all, we are growing at 6.5% year on year. Our total GDP size is about $4 trillion. And this 6.5% growth which is coming, out of which we are only doing 20% of export, total put together. And usme bhi 20% mein, we are only 20% dependent on US, which is only 4% of the overall GDP growth. So you see how minuscule it is. So, and let's look at the number also. So 2024, we did $77 billion of export to the US. Acha, UAE may we did about $35 billion. Netherlands is about $22 billion. UK is about 12, and UK से अभी recently आपने देखा डील साइन हो गया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का. So this number has already started growing at 4. This has reached to 24 point. This has reached to 14.5 now, and it is likely that this number will shoot up to $22 to $23 billion this year itself. This is the growth that we are going to expect from this UK deal which is happening. So then let's look at market versus the US trade mix. In this slide, very important slide, it is in the sense that out of that 20 ka 20, look at our share, US share, in terms of what percentage it goes that out of 20, how much share in export to the US. So engineering goods is about 22%. Electronic goods is 16%. And let me tell you, electronic goods are not part of tariff. Drugs and pharma is about 12%. That is also not part of the tariff war. And other products, maybe like, for example, so if you put this two things out, then 16 plus 12, which is about 28%. So 28% of 28% is not affected. And let's look at on the other side, the first slide, first data table, where our weightage of financial services in the index is as high as 31%. And financial services has nothing to do with US. These are more of inward looking than outward looking sectors. Your information technology does not come under tariff.
It has this has 8% weightage to our index. Oil and gas, automobile, auto component, healthcare, fast moving. Now there are industries where it has nothing to do with US exports. Our financial products are made in India, consumed in India, most of them, and do not have very less amount of income coming from the US. So this clearly indicates that when you really deep dive and see that our exports have not really affected much, and India's export to the US are concentrated in engineering, electronic, pharmaceutical, gems and jewelry, which have relatively small representation in the overall Nifty 500 market cap weight that I am referring. And Nifty 500 is dominated by this financial services, is dominated by IT, FMCG, reality. So India is clearly a consumption story, and we are a client for most of the countries. We really don't have to worry about as far as this tariff is concerned. That's the reason this is for the first time India as a country is retaliating and speaking loudly and taken a very strong stand that we would not kneel down this time anymore, in the sense that we'll stick to our own terms and conditions. And ये पुराना इंडिया नहीं है कि जिसे आपने ब्लैकमेल कर दिया टेरिफ वॉर से और उन्होंने चेंज कर दिया. And our honorable prime minister, and people like Amitabh Kant, they're all talking about compensating this loss by inviting either some of the countries to either invest in India, and I'll show you in the next slide how it is going to deal with this situation. But India will not allow US to enter into agriculture or dairy products, and I'll explain that in next slide. So what actually drives India's economy? Let's look at one by one. So first is that our people spending in 2028 was 58%. In 23-24 it was 56%. In 24-25 last year it is about 56%. The government spending is continue to be at about 9.5%. Investments in building, machines, etc. is continues to be at about 33%. And our trade, import and export, exports although have reduced from 23 to 21%, and import is also at a similar level. So most of India's economy runs on what people spend, which is PFC, over 56%. So आप देखिए हमारा internal consumption story बहुत strong है, and on top of that government spending is about 9%. So that's the second engine. So first engine is and all the cylinders are firing, in the sense that all engines are firing, because आपका consumption भी चल रहा है, आपका government spending भी बढ़ रहा है, and आपका investment is also growing. But the question is, if everything is doing well, then why market is not supporting those data points? So we'll come to that. Let's talk about what are the engines that are firing. Okay, इंडिया जो है ना, इंडिया भारत जो है वो गांव में बसता है. जो इंडिया का आज भी जो हमारी डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर is as high as 70%. This time the monsoon is above the average by almost 5% so far, what has been witnessed. So better rainfall. इससे क्या हुआ है? Let's look at. अभी हम लोगों ने 13% का ग्रोथ देखा है राइस में. राइस का जो क्रॉप है, जो हमने उसको सीड किया है, उसमें 13% का ग्रोथ देखने को मिला. पल्सेस में 3.5%, अदर सीरियल्स में 3.7%, शुगर कैन इज अबाउट 0.55%, एंड ओवरऑल अगर आप टोटल करते हैं तो 31% का प्रोडक्शन इस बार इंडिया का उसमें ग्रोथ देखने को मिलेगा. सो रूरल इकोनॉमी is outpacing the urban demand, and higher rural demand uplifts in learning across sector, which is basically an inflation cushion. And जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा ऑब्वियसली एक्सपोर्ट बढ़ेगा. तो आपको देखने को मिलेगा कि ओवरऑल
इकोनॉमी में जो सिचुएशन है वो यहाँ से अच्छी होते हुए दिख रही है। सेकेंड पॉइंट, फ्रॉम पॉलिसी टू पॉकेट्स, इन द सेंस दैट आपने देखा है कि अभी रिसेंटली जो बजट अनाउंसमेंट हुआ था जिसमें हमारे ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने इनकम टैक्स का एग्जम्पशन दिया था अप टू 12.75 लाख रुपीज। तो जिनकी अर्निंग 12.75 लाख से, दे डोंट हैव टू पे एनी टैक्सेस ऑन दैट, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ईएमआई आपका सस्ता हो गया। आई एम श्योर आप लोग को फोन आता है कि आप लोन ले लीजिए, बैलेंस ट्रांसफर करा लीजिए, नए रेट्स कम हो गए हैं, ऑटो लोन कम हो गए, पर्सनल लोन कम हो गए। हाउसिंग में ओवरऑल थोड़ा डिमांड दिख रहा है। एमएसएमई का क्रेडिट उन्होंने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बढ़ाने के लिए दिया है बैंक्स को। बैंक्स के पास में लिक्विडिटी आ गई है। लास्ट ईयर का प्रोविजन हुआ, ये जो रेट कट्स हुए हैं जिसमें 3 लाख करोड़ जो है बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी आ गई। लास्ट ईयर आपने देखा था लिक्विडिटी ड्राई अप हो गई थी, जिसकी वजह से ओवरऑल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कम हो गया था। तो अभी बैंकिंग में लिक्विडिटी भी पंपिंग कर दी गई है। दूसरा आप देखिए कि लेट्स लुक एट, सो फर्स्ट इंजन इज योर कंजम्पशन, आई टॉक्ड अबाउट इट। सेकंड इंजन आई टॉक्ड अबाउट द रूरल इकोनॉमी, हाउ इट इज शेपिंग अप द कंजम्पशन, एंड थर्ड इज लेट्स टॉक अबाउट द कैपिटल एक्सपेंडिचर डन बाय गवर्नमेंट। सो अगर आप अप्रैल मई जून का डेटा देखते हैं, so April, May and June में when you look at last year in April and this year in April, गवर्नमेंट ने वहाँ पे 99,000 का टोटल स्पेंड किया था, या 1,59,790 करोड़ का स्पेंड किया है। देन May में इट इज अबाउट 61,000, June is about 53,000, vis-a-vis last year May was 44,000 crores and this year it is 61,000 crores. So look at the kind of spend which is going up by government of India, and that too by maintaining the fiscal deficit, maintaining the current deficit very well. So this government has not pledged the future of our kids to grow. In fact, our overall debt to GDP ratio has come down by almost 4% post Lehman Brothers crisis. But when you look at the globe, you know, US, they have $36 trillion debt, you know, udhari. China has about $19 trillion, and India ka, we are not even 70% of our debt to GDP ratio, and rather it is coming down. So this clearly indicates that how good we are in terms of economy. Couple of other data points to be looked at. I'll move little faster now. So there is something called Financial Inclusion Index, and this indicates that how economy is financializing in terms of you know, money moving from offline to online, money moving from physical to financial, and how financialization is happening in India. So why this matters for the Indian economy? Because it strengthens the financial access for rural and underbanked populations. Because जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं है उनको बैंक अकाउंट का एक्सेस मिला है। तो 40 करोड़ धन जन योजना में 40 करोड़ ये जो बैंक अकाउंट्स खुले हैं, इसमें से सिर्फ 20% डॉर्मेंट है। 32 करोड़ जो बैंक अकाउंट है वो फंक्शनल है। So it encourages the participation in capital markets, including mutual funds, SIP, demat account. It basically promotes the usage of formal credit. Credit जो आज एक पान ठेला चला रहा है उसको भी पेटीएम के थ्रू क्रेडिट अवेलेबल है ऑनलाइन। यू नो, इंश्योरेंस, पेंशन सिस्टम्स वो डेवलप हो रहा है इंडिया में। इट बिल्ड्स रेजिलियंस एंड इंक्लूसिव एंड डिजिटल कनेक्टिविटी in the economy, and it supports the long-term goal of the financial empowerment and economic equality. So this last year it was at 64.2, and this year FI index is at 67.0, 67.0, in the sense that it has improved, an improvement driven by because of the digital adoption. लोग पेटीएम से, फोन पे से जो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, better financial literacy, you know, thanks to my team for helping us to
put up this beautiful presentation, do complete study and share this with all of you. So we are trying to improve this financial literacy and more inclusive and efficient service delivery. Because of that, this is happening. Second, when you look at the digital payment index, this is a very important thing. There, what we are witnessing is month on month, ever since you look at from 2018 to 2019, 20, 21, 20. From 100, it has moved to 493.22%. So that's the kind of transactions which is happening digitally. What it means for the economy, it basically reflects the India's rapid shift to digital payment. मुझे याद नहीं है कि अब मैं कभी पिछले कितने दिनों से जब भी my wife tells me to go and buy a packet of bread or a milk packet for the breakfast, I don't think I would have carried my wallet with me in the last 24 months or so. So it enhances the transparency because you know that what kind of transactions happening as a regulator in the economy, and it becomes ease of transaction, supports the growth of fintechs, UPI and digital commerce. You know that how these companies are growing, and reinforces India's transition to a less cash economy. Then another study that we did is what is happening is because of this financialization. पहले क्या था, there was a time when people were dependent on banks. कि वे बैंक लोन देगा, बैंक का एक ही तरीका था कि बैंक्स के ऊपर डिपेंडेंसी ज्यादा थी ये कंपनीज की, एंड वही एक मात्र रास्ता था फंड रेज करने का. अभी हमारा कैपिटल मार्केट इतना बड़ा हो गया है बिकॉज ऑफ दिस फाइनेंशियलाइजेशन कि पीपल आर एबल टू डू, they are able to get their IPO listed and participating in capital market and raising funds. So हमने compare किया with Nasdaq. So 23 में we were at about 7.9%, 24 we were at 18% vis-a-vis US, which is at 8.5%, and this year we are at about 11%. This is I'm talking about Jan to June. Second half of the year is expected to be even more better. So somewhere we're going to beat Nasdaq again in terms of raising capital. So ये बता रहे कि जितने नए IPO आते हैं वो IPO के थ्रू ये कैपिटल मार्केट में फंड रेज हो रहा है. Then let's talk about GDP. So RBI का projection is 6.5%, IMF projection is 6.4%, and economy is somewhere in between 6.4 to 6.5%. Despite this tariff war. Why? Because you had above normal. By the way, first quarter 6.5, second quarter 6.7, third quarter 6.6, and fourth quarter will conclude at 6.3%. Why? Because you have CPI, which is well controlled, inflation is well controlled, higher capacity utilization, which I'll show you in the next slide, favorable financial conditions, above normal monsoons, and robust government spending and supportive monetary and regulatory measures. अब देखिए, the last 1 year RBI has been reducing the interest continuously. They are evaluating. So from neutral they were accommodative. They took a stand of reducing it by 0.5 beeps this time also. So they're all cylinders are working silently. ये थोड़ा समय लगेगा, and then you will see again everything is coming on track. CPI inflation, by the way, fell to 8th straight month to a 77-month low at 2.1%. Our food inflation is well controlled, which last year went out of control. So projection for inflation is second quarter में तो 2.1 है, third quarter में it should go up to 3.1, and by the time fourth quarter आता है, our inflation will be somewhere at about 4.4. RBI's goal is to, and the target is to keep it at about 4, and even if it inches up to 4.4, it is manageable. So key growth engine for the global economy, India. अब इंडिया का क्या है कि हमारा रेट इज अबाउट 6.5. मैं बोलता चलिए आप IMF का 6.4 ले लेते हैं, बट व्हाट इज द ग्रोथ रेट ऑफ द ग्लोब?
The entire globe is growing at 3%, and we are double than that in terms of growth. So in a way, our contribution to the world in terms of growth is 18%, and US is contributing only 11%. So where would you like to take a bet? Now that you will have to decide, that you want to bet on the horse which is moving faster, or you want to bet on the horse which is going slow. The other data point which is important, that let's look at PMI data. The US is doing this trade war. You see their PMI is, as I said, anything beyond 50 is considered to be much better. Anything less than 50 is like your economy is not expanding, it is into contraction. So whereas India has 59.1%, previously it was 58%. So in terms of our manufacturing sector, it's expanding, it's growing. Whereas in China and US both, it has come down. So this is also not reflecting in the price that you are witnessing in the stock market. All that will take some time to grow. Well, this is a very important slide itself. I thought we'll be putting some numbers, but my question is, why should I show you FII's inflow? Are we dependent on FII's inflow anymore? That's the question that we need to ask. Should we continue to be dependent on that? Their overall exposure in Indian economy is at decadal low. They are, for the first time, sub 15.5% of the overall market cap of the GDP. So you have economy size, which is $4 trillion. You have market cap, which is about $550,000, 50 lakh crores. And their overall exposure is now about only 15%. Out of which, my sense is that 8 to 10% of that 15% is basically a very, very long-term money. Maybe pension funds or some of the retirement funds have come in India for next 25, 30 years. But otherwise, the overall net flow has come down to big time. Let's look at the valuations. So valuation wise, I agree that it is not into cheap valuations, it is into neutral zone. So it is not expensive, but it is not cheap also. It is somewhere in between. Your Nifty 50 is closer to last 10 years of average, which is about 19 ka P, and 1 year forward is about 21 now. Mid cap is at about 29.5, and small cap is about 26. Now, obviously, when you have an economy which is growing, you can't expect prices to go down. If you want to buy a house in Bandra, you will have to pay premium. And India is basically a Bandra for the world, because your economy is growing at 6.5%. Most of the countries are either have negligible growth, or maybe they are struggling between 1 to 2% of the growth. And when you have this kind of growth, obviously it demands premium. So my sense is that market cap to GDP will continue to be above 125%, and it is here to stay, which is a new normal. The advanced declining ratio that we pick up every time, and because of the FPI's selling pressure last month, we saw that it has come down to below 1. Below 1 is not a good number to be looked at from a stock market point of view. It is at 0.8%, so declinings were higher than advance. It shows that how many stocks were going up and how many stocks were going down. So my sense is that eventually you will see that even when FPIs are not coming, our mutual fund industry is sitting on more than 2.5 to 3 lakh crores of cash. Month on month, we are getting about 23,000 to 25,000 crores of SIP inflow, which is, I think, to my mind, is sufficient to deal with this redemption of FPIs
and therefore India as an economy, the index level is ranging between 80,000 to 82,000. But as we see these tariff wars settling down, as we see the stand of India getting cleared, as we see some amount of substitute and the export substitutes building up in economy, talking to other countries, our honorable finance minister and our uh, prime minister is continuously engaged with other economies to see to it that how trade goes up. They are in China, talking about increasing our trade with China as well. So keeping all that in mind, my sense is that these issues will sort out. The muted earnings for this quarter will also start improving as the economy is improving. And my sense is from third quarter onwards, you will see economy shaping up. With that, I would like to conclude my remarks here and hand it over to Samir. Thank you. थैंक यू विकास जी। कुछ हमारे दर्शकों ने अपना हैंड रेज किया है, तो पहले मैं उनके पास जाना चाहता हूँ और उनसे क्वेश्चन लेना चाहता हूँ। तो विकी जी, आपने हैंड रेज किया हुआ है, आप शायद कुछ पूछना चाह रहे हो, तो मैं आपको अलाउ करता हूँ बात करने के लिए। विकी जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हो? आप में से कोई और कोई पूछना चाहते हैं तो प्लीज आप क्वेश्चन चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। ठीक है विकास जी, जब तक उनका क्वेश्चन आ रहा है, एक्चुअली में विकी जी ने हैंड्स डाउन कर दिया तो शायद उनका कुछ क्वेश्चन नहीं होगा। तो मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि आजकल एक स्लोगन चला हुआ है, ये नया भारत है। तो क्या सच में हमारा जो नया भारत है आज के इस सैंक्शन के परिप्रेक्ष्य को और इतना ताकतवर है कि वो सेल्फ डिपेंडेंट होकर के आगे ड्राइव कर सकता है? क्या लगता है आपको, नंबर्स क्या बताते हैं? ये बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है समीर जी आपका, और जैसा मैंने आपको डेटा पॉइंट दिखाया कि इंडिया की जो कंजम्पशन स्टोरी है बहुत स्ट्रांग है। आपका जो इंजन है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग इंजन है अक्रॉस द ग्लोब। आपकी ग्रोथ रेट इज 6.5%। आपका इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, आपकी डिमांड इंटैक्ट है, आपके फॉरेन रिजर्व्स आपके पास है, आपका करंट अकाउंट डेफिसिट मेंटेन्ड है, आपका फिस्कल अकाउंट डेफिसिट मेंटेन्ड है, आपके पास में कोई बहुत ज्यादा डेट टू जीडीपी रेशियो नहीं है। अक्रॉस द ग्लोब अगर देखते हैं तो सबसे लोएस्ट होगा परहैप्स। आपके एवरेज एज जो है इकोनॉमी की वो लेस देन 30 है। आपके यहाँ पे फिनेंशियलाइजेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, मैंने आपको भी नंबर दिखाया। एजुकेशन लेवल इज गोइंग अप, एसआईपी नंबर्स आर गोइंग अप, capital market inclusion is going up, number of IPOs are coming and raising the funds. So ये जो सिनेरियो जिस हिसाब से हो रहा है, in many places either we are number 2 or number 3. As we move from $4 trillion to five and a half, $5 trillion, we will become the third largest economy in the world. And third, after becoming third largest economy, two things will happen. One, the geopolitical risk is likely to go up for India. There is no denying on the fact that others may not be satisfied with your growth all the time. So they will have their own way of running the show. So India has to take those challenges. But at the same time, you see the kind of effort that our industrialists have put in the last 15 to 20 years. इसमें दो तीन concern है economy में. One, the private consumption is not as high as government spending. So because of, despite higher PMI numbers, the overall the capacity utilization is not peaked out to the level what was expected, because of and that is a concern that GST number is not growing
at a nominal GDP growth rate. So our nominal GDP growth is about 9.7. As I talked to you, 9.5 to 9.7. So what is nominal GDP growth is basically GDP and then the inflation, both put together coming at about 9.5%. And what has happened is that GST collection is not growing at 9.5% when you look at last 1-2 months data points. Now that's a concern. So as the capacity utilization goes up, when you see private companies taking a slightly bigger expansion than what they were doing in the last 2-3 years, then automatically you will see economy picking up. ये गिरीश पुरोहित जी हैंडल्स किए हुए हैं, तो मैं उनको अलाउ करता हूँ बात करने के लिए, वो कुछ क्वेश्चन करेंगे। गिरीश जी, मैंने आपको अलाउ कर दिया है, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। या गिरीश जी। Namaskar, Vikas ji. Can you hear me? Namaste, ji. Namaskar. Hi, I'm invested in the Vikas mid-cap, the emerging opportunities. This year only I started my PMS for the first time with you. So I just want to understand, given its, performance so far, obviously for a long term, like coming 2-3 years, do you see the impact on performance, like the past performance, because of all this uncertainty going on in this fund? I'll show you. So I will not be very specific on particular scheme that I'll talk to you one-on-one, but I'll show you one interesting chart. Can you see my screen, sir? Sure, sir. Okay. So when you look at, I can see only both of your faces, still not seeing the screen. Can you see the screen now? Not really. Now I see. Okay. So देखिए, इसमें आपने देखा है कि बिकॉज आपने मिड एंड स्मॉल कैप में इन्वेस्ट किया है, ये हमने एक स्टडी किया सेगमेंट शेयर परसेंटेज ऑफ टोटल मार्केट कैप। सो ये देखने को मिला, पहले क्या होता था कि बेसिकली सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स निफ्टी 50 में होता था, मैक्सिमम शेयर उसका होता था 2011 में आप देख 12-13, पर धीरे धीरे 25 में आते हुए आपको देखने को मिल रहा है कि मिड कैप, स्मॉल कैप एंड माइक्रो कैप, आप देखिए माइक्रो कैप यहाँ पे ऐड हो गया है। कैन यू सी हियर? ये पार्टिसिपेशन है वो इकोनॉमी में बढ़ गया है एंड लार्ज कैप म्यूट हो गए हैं थोड़ा। तो बिकॉज आपका जो इन्वेस्टमेंट है मिड एंड स्मॉल कैप में है, इसका आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, बिकॉज इसमें काफी कंपनीज नई भी एंटर हो रही हैं and these PMS managers are able to identify those companies at an early stage of their growth curve, and because of this their share in the overall market cap, it is only going up, in the sense that these PMS managers are able to identify those companies and able to ride through their growth journey from the early stage of their growth. So this clearly indicates that when you have 5 years of horizon, you will certainly going to get desirable returns, that what you're looking out for. I mean, with a realistic. Okay. Oh, okay. Yeah. So just one follow-up question. Like for example, I have my other portfolio also, which was remnant from earlier, services there, and there's mostly large cap. So should I continue to hold that, or like like things like Bajaj Finance and L&T and things like that? Those are old stocks which are there and given good performance so far. But should I continue to hold them, or should I shift to something different now? That's a good question. In fact, next time when I'll meet you, I'll show you what kind of percentage that you should have in terms of large cap, mid cap, and small cap. So what I'll do is I'll request my team to share a list of questionnaires with you. Based on that, we'll try and analyze your risk appetite, and based on that, we'll create a portfolio after understanding your risk appetite, and see to it that when you have a large cap portfolio, first of all, should we continue to hold large cap? The answer is yes. Despite last 3 years of underperformance, we have to have good quality
businesses, because we cannot paint the entire wall with the same brush. As you rightly said, there are some stocks from the large cap space which has delivered returns in last year, and last year, in last 3 years, all put together. So what we essentially needs to do is to first understand your risk appetite. Second, and look at your portfolio, do some amount of study there. And if those businesses are doing well on isolated basis, then we would like to hold them and have some amount of exposure based on your risk appetite in the large cap, and also create a differentiated and complementary strategy which will eventually help you grow the overall asset class, overall growth. Yeah, I've been in touch with your relationship manager, so yeah, I'm looking forward for this input. Yeah, thanks. Certainly, sir. We'll ensure that. Thank you. Okay, thank you, Girish. Vikas ji, we have another question from Ravi ji. So Ravi ji is asking, how are AIFT2 as a category likely to perform over the next few years, especially due to overall global scenario in our case? So your view, we want your view on this. Category 2. Yes. ओके, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है. देखिए क्या है कि अगर आप एफपीआईज का डेटा, मैंने इस बार डाला नहीं, बट लास्ट मंथ में डाला था और नेक्स्ट मंथ में फिर से इंक्लूड करते हैं. ये देखने को मिला है कि एफपीआईज का ओवरऑल इन्वेस्टमेंट कम नहीं हुआ इंडिया में. उनका रिडेम्पशन लिस्टेड स्पेस से निकला है, बिकॉज दे डोंट हैव एनी व्यूज ऑन द मार्केट्स. And October, November was a time when there was an election in US. So some of these FPIs have booked some profits and went back to their own countries and invested money in US markets. And when they don't have clarity in terms of tariff in India, they are not creating any fresh positions as far as FPI number is concerned in the listed space. But unlisted में FPIs का पैसा बहुत तेजी से आ रहा है. 2011 से 2012 से पैसा आना चालू हो गया था. मैं आपको एग्जांपल देता हूं. Between 2010 to 2020, India produced 54 unicorns, and none of us, including me and you, have had an exposure to those businesses. I'm talking about Grow as a business. I'm talking about Paytm as a business. I'm talking about other unicorns that the list can go on. But 2021 onwards, what we started witnessing is that some of the investment managers started applying for license, Cat 2 license, and started acquiring stake of these businesses at an early stage of their growth curve. When large private equity firms like Sicovas of the world or Blackstones of the world started building up their positions sizably in this segment, we saw that domestic participation also started happening through category 2. So overall, my view on category 2 private equities funds are very bullish. My sense is that equal amount of opportunity is there in the unlisted space also in India. And as we move ahead from 2025 to 2035, next 10 years, and when we move from $4 trillion to $8 trillion of economy in next 10 years time, you want to see at least 1,500 to 2,000 companies coming and getting listed in the stock markets. And those businesses will clearly exit, will have an exit plan through IPOs. If they do well, the promoter some amount of stake to be sold and raise funds. So clearly, I'm very bullish on category 2 AIFs, and some of them can be looked at from 5 years, 6 years point of view. Thank you. रवि जी मैंने आपको अलाउ कर दिया है. आपने हैंड रेज किया था, तो आपका कुछ अगर फिर क्वेश्चन है तो प्लीज आप पूछ लें. Sure, thank you. So just a follow-up question on the category 2 AIFs. So what is the current exposure of foreign investors in, let's say, the overall mix of money that's going into venture capital in India currently? And how has it shifted given the change in the investment, given the fact that a lot of FIs have also been moving out from the listed companies? How has that changed for PE funds? Right.
So as I said that there is a clear-cut value migration happening from listed to unlisted in India. But well, I don't have exact numbers at the moment, but we can do this homework and get back to you and let you know that what is the size that the total is built Yeah, up. just trying to get a sense that let's say X amount, let's say out of 100, what percentage of the money which is going towards PE is domestic funds and what is international? And Yeah. how was it historically and how does it sit together currently? Because my take is that while you said that, there's huge potential for a lot of new unicorns to come out of India, but they also are dependent on funding. And that funding needs to come from all sources. It can't just be domestic or, or lopsided to only international. Of course, Yeah. right now there's a lot of domestic money flowing in, but we also need the international funds coming in. So just to get a sense of what are the trends and how that moves. Sure, sure. No, we'll certainly share those data points with you, and that will help you to kind of take the right decision. Okay, thank you. Yeah. So Raviji, we will contact you one by one, right? Sure. And we will share those data points, right? तो रवि कुमार राजीव कुमार जी आपने हैंड रेज किया, मैं आपको अलाउ कर राजीव जी आप पूछ लीजिए क्वेश्चन ओके राजीव जी नहीं पूछ रहे क्वेश्चन गुड इवनिंग सर ओके एक्चुअली आजकल इंडियन मार्केट के कंपैरिजन में इंटरनेशनल मार्केट लाइक चाइना, यूरोपियन मार्केट, जापान बेटर कर रहा है, तो इन दिस सिनेरियो कोई आउटबाउंड थ्रू गिफ्ट सिटी में इन्वेस्ट करना ठीक है? देखिए, आपका क्वेश्चन रेलेवेंट है सर कि राजीव जी आपने बोला कि इंटरनेशनल फंड्स में एक्सपोजर होना चाहिए क्या? द आंसर इज यस. इट इज मोर ऑफ स्ट्रेटेजिक कॉल देन अ टेक्निकल कॉल. टेक्निकल कॉल का मतलब है कि अभी बिकॉज दे आर डूइंग वेल, so should we do it now is not the right answer, because if we are going through difficult phase, the government of India is trying their best to see to it that these issues are arrested at the central level and see to it that it further grows. Now as far as globe is concerned, बाकी लोगों का व्यू इंडिया में टेम्परेरी अगर नेगेटिव भी है और एफपीआईज का पोजीशन नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि परमानेंटली खत्म हो गया है. ऐसा देखने को मिला, मैंने भी आपको स्टडी कराया था 2015, 2016, 2017 में आप देखते हैं तो एक साल का अगर एफपीआईज का भी इनफ्लो अगर आप देखते हैं तो जिस साल 2 साल कम होता है तो तीसरे साल उससे डबल इन्वेस्टमेंट इंडिया में आता है. ये एक साइकिल है. रही बात मार्केट्स अच्छा कर रहे हैं क्या, इंडिया इज द ओनली कंट्री, द आंसर इज नो. There are other countries, what you rightly said, they are doing better. Like for example, Switzerland. Switzerland is doing fantastic in terms of growth. Yes. Then you have, UK, which is doing very well. Even nowadays, Japan is also doing well. Of late, Japan is doing well. Japan में काफी emerging market का जो inflow था, वो इंडिया चाइना छोड़ के जापान में भी गया है पिछले 3-6 महीने के अंदर. So Japan as an economy is bouncing back after 25 years. Yes. They were degrowing. So वहां पे भी डिफ्लेशन था, अभी वहां पे इन्फ्लेशन वापस आ रहा है, वहां पे स्थिति. तो क्वेश्चन ये है कि अगर इंडियन मार्केट में इफ वी आर ऑलरेडी इन्वेस्टेड, तो टू सम अमाउंट और टू सम एक्सटेंट वी शुड इन्वेस्ट इन दिस आउटबाउंड फंड इन इंटरनेशनल मार्केट ऑल्सो. यस. सो आप ये देखिए कि ओवरऑल अगर आपके पास 100 रुपए का पोर्टफोलियो तो 20 रुपए आपका जो है इंडिया के बाहर होना चाहिए. ये हमारा ऐसा सोचना है इसमें. ओके, थैंक यू. विकास जी एक लास्ट क्वेश्चन है संजय जी का, मैं वो लेना चाहूंगा, इसके बाद हम लोग स्टॉप करेंगे इसे. तो संजय जी बोल रहे हैं कि सर सजेस्टेड दैट मार्केट वैल्यूएशन इज नाइदर चीप नॉट expensive, but at the same time India growth story is intact. So question it is a good time to invest in scattered way. Oh yes, because
looks like, as I said, that things are bottoming out. जो ग्रोथ और जो तैयारी हो रही है वो प्राइस पे तो दिख नहीं रही है. प्राइस पे सिर्फ कंसर्न दिख रहा है. पहला कंसर्न यूएस टैरिफ का दिख रहा है, दूसरा एफपीआईज की पोजीशन इसके वजह से बन नहीं रही है, तीसरा कंसर्न है प्राइवेट कैपेक्स इतना नहीं हो रहा है. बट अगर दूसरे तरफ देखते हैं तो ग्रोथ आपको 6.5% की देखने को मिल रही है, जो कि यूएस टैरिफ होने के बाद भी बहुत ज्यादा अफेक्ट होते हुए नहीं दिख रही है. और मैंने आपको बता दी मैक्सिमम इफेक्ट भी होगा तो 6.5 से 6.4 पे आ जाएगा, जो आईएमएफ का ग्रोथ है. जो भी आपका ग्रोथ जो है बाकी कंट्री से डबल हो जाता है. 18% का कंट्रीब्यूशन है. तो फंडामेंटल्स काफी स्ट्रांग है. कुछ कंपनियों के फंडामेंटल्स खराब हुए हैं बिकॉज ऑफ लो कंजम्पशन, बिकॉज ऑफ लो डिमांड इन रूरल एरिया, बिकॉज ऑफ द लो प्रोडक्शन ऑफ द राइस pulses, the crop overall, and because of the other issues like liquidity crisis. अब liquidity crisis solve हो रहा है. 3 से 4 लाख करोड़ का मैंने आपको बताया गवर्नमेंट ने प्रोविजन किया है, और बैंक्स की अर्निंग्स भी बढ़ी हैं. मॉनसून अच्छा हो गया है तो रूरल भी इकोनॉमी में भी अभी आपको डिमांड देखने को मिलेगी. एक्सपोर्ट भी आगे बढ़ने वाला है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कॉन्शियसली दे आर टॉकिंग टू अदर कंट्रीज टू सी टू इट दैट दे एक्सपोर्ट मोर. तो मेरा कहने का मतलब है कि ये सब ये साल में आपको हो सकता है अगले क्वार्टर में ही आपको देखने को मिल जाए, या हो सकता है उसके अगले क्वार्टर में देखने को मिले. तो जैसे ही आप साइन देखते हैं कि आपका जीएसटी कलेक्शन बढ़ने लगे, आप उस समय पे आप फंड्स डाल दीजिए. अभी आप स्टैगर्ड में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए मेरे हिसाब से, अगर आपका 3 से 5 साल का होराइजन है तो. सर एक लास्ट क्वेश्चन. हम अक्सर बातें करते हैं कि इंडियन इकोनॉमी इज ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 6.5% और यूएसए या चाइना दे आर ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 2-3%. लेकिन सर एक चीज अगर एब्सोल्यूट टर्म में हम देखें, उनकी 30 ट्रिलियन की इकोनॉमी है. अगर वो 3% भी ग्रो करते हैं और हम अगर 6%, 6.5% भी ग्रो करते हैं तो कोई मैच नहीं है. एब्सोल्यूट टर्म में वो हमारे से बहुत ज्यादा ग्रो करते हैं. इस पे क्या कहेंगे? ये मुझे नहीं समझ आता है. पेपर में, हर जगह, वेबिनार में मैं सुनता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अगर वो 3% भी ग्रो कर रहे हैं तो हमारे से बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे हैं. नहीं, आपका देखिए पॉइंट सही है कि टोटल साइज पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो उनका, बट क्या होता है कि एक है कि लार्ज कैप कंपनी हिंदुस्तान लीवर, और एक है जो मिड साइज कंपनी है जो ट्रेंड है जो ग्रो कर रही है फॉर एग्जांपल. या तो आपने क्या देखना है कि किसकी ग्रोथ रेट ज्यादा है, उसके हिसाब से उसको वैल्यूएशन मिलता है सर. जिसकी ग्रोथ रेट ज्यादा है मार्केट में, क्योंकि ग्रोथ रेट से पी क्या है, प्राइस टू अर्निंग. तो अगर अर्निंग ग्रो करेगा तो प्राइस या नीचे कम आता है. मतलब आप अगर पीई अगर आपका मान लो 100 रुपए का प्राइस है और आपकी अर्निंग 20 रुपए है तो आपको 5 का पी मिल रहा है. यही अर्निंग अगर आपको 40 की हो जाती है आपकी, तो 2.5 का आपका पी हो जाता है. तो पहली चीज है कि ग्रोथ रेट है. दूसरा आप बोल रहे हैं एब्सोल्यूट नंबर में, दैट आई एग्री कि सबसे बड़ा यूएस है, उसके बाद में चाइना है. चाइना एंड हांगकांग अगर आप ऐड कर देते तो चाइना, एंड अभी थर्ड नंबर पे जापान है, और फोर्थ पे इंडिया है, एंड देन जर्मनी है. अभी एज वी बिकम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, वी विल बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड. सो ऑब्वियसली वी कांट हैव दैट काइंड ऑफ ग्रोथ. उसके लिए तो समय लगेगा, हमें 8 से 10 साल लगेगा. तो हमारा वैल्यू भी तो मार्केट कैप उतना बड़ा नहीं है ना. आप यूएस का अगर मार्केट कैप देखते हैं तो $42 ट्रिलियन का मार्केट कैप है, और अगर आप 10 साल का रिटर्न देखते हैं इंडाइसेस का सर, तो यूएस और इंडिया यही 2 कंट्री है पूरे ग्लोब में जिसमें कंसिस्टेंटली आपको डबल डिजिट में इंडाइसेस का ग्रोथ मिला है नॉर्मली. लेकिन सर सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यू, आपको नहीं लगता कि जैसे अभी तक इंडिया में सर्विसेज आईटी वगैरह की वजह से बहुत तेजी से हम ग्रो हुए हैं, लेकिन आज की डेट में आईटी अब हट के एआई में जा रहा है, और एआई चाइना जितनी तेजी से, 2 चीज में चाइना का बड़ा वर्चस्व है, जैसे एआई और आप देखो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, वो पूरे वर्ल्ड को सप्लाई करता है. तो
that is the reason why he is dictating his term to USA also. और लेकिन इंडिया यहाँ पे भले ही वो ग्रो कर रहा है, 3 ट्रिलियन इकोनॉमी हो गया, 4th पोजीशन पे पहुंच गए, 3rd पे पहुंच जाए, लेकिन आप देखो एआई में हम बहुत कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हैं. इवन अभी चाइना ने रेयर मटेरियल देना बंद कर दिया तो हमारी ऑटो इंडस्ट्री हिल रही है. तो कहीं ना कहीं इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने में, और आज के पेपर में ही मैंने देखा कि चिप वगैरह बनाने के लिए वो अलाउ कर रहे हैं, तो इट विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम. एंड प्राइवेट कैपेक्स नोबडी इज डूइंग राइट नाउ, नोबडी इज बुलिश. सिर्फ गवर्नमेंट कैपेक्स से अभी थोड़ी देर पहले आप ही कह रहे थे कि ओनली गवर्नमेंट कैपेक्स इज कमिंग, तो दिस इज ट्रू. तो ऐसे में आई डोंट नो, 1-2 साल तो मार्केट की पोजीशन अच्छी नहीं लग रही है कि कुछ ग्रोथ मिलेगा. यू आर टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट क्वार्टर, बट आई डोंट नो. आप क्या कहेंगे इस पे? नहीं, मैं अग्री करता हूँ सर आपकी बातों से कि एआई में चाइना बहुत ज्यादा है. देखिए, जैसी इकोनॉमी की साइज होती है ना, उतना अमाउंट स्पेंड होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, और वो सालों पहले से चालू हो जाता है. तो जो एआई की तैयारी है, चाइना ने आज नहीं की, 4 साल 5 साल पहले से तैयारी चालू कर दी है. दे हैड दैट काइंड ऑफ financial muscles to create a separate research team, and of course they were ahead. उनका क्रेडिट नहीं लेके जा सकता कि इंडिया जो है थोड़ा इसमें पीछे है. इंडिया में अभी हमारे पीयूष जी जो है कॉमर्स मिनिस्टर, उन्होंने बोला ना, वे समोसा चाय की दुकान के अलावा भी आप और भी कुछ काम करो एज ए एंटरप्रेन्योर. तो जैसे एआई में काम करो, ऐसे इस तरह के इनोवेटिव आइडियाज लेके आओ. तो ये जो पूरा स्टार्टअप का माहौल जो है 2013 से जो हमारे इंडिया में बनना चालू हुआ, 2013-14 टाइम से, ये वही चीजें जो यूएस ने 1980s में की थी, जब वो दे वर एट $2.5 ट्रिलियन ऑफ द इकोनॉमी. they also started supporting. So there will be time when some of the unique companies from India tomorrow, अभी आपने देखा होगा recently Google and Perplexity में they are talking to each other for acquiring. So तो उसमें इंडिया में आगे चल के हो सकता है कि कुछ ऐसा सर्च इंजन बनाए या इस तरह का बनाए. तो इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक फंड सेटअप किया है थ्रू बेसिकली अमिताभ कांत इज हेडिंग दैट प्रोजेक्ट. Mr. Amitabh, this is called, he also known as शेरपा, इंडियन शेरपा. एंड उनका जो नीति आयोग है वो स्टार्टअप को सपोर्ट करने के लिए, उनका काफी फंड साइज है, वो उसमें से भी फंड्स दे रहे हैं कि आप इनोवेटिव आइडिया लेके आओ. बट जो आप बोल रहे हो सही है, समय लगेगा क्या? द आंसर इज समय लगेगा. मैं 1-2 क्वार्टर में ये बोल रहा हूँ कि मार्केट जो लगातार गिर रहा है ना, वो कहीं ना कहीं सेटल होता हुआ दिख रहा है अगले 1-2 क्वार्टर में, और यहाँ से पॉजिटिव टर्न लेना चाहिए मार्केट ने. मेरा वो कहने का मतलब था सर. ठीक, एग्री. थैंक यू सर, थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल इनसाइट. थैंक्स अ लॉट. तो विकास जी, 2-3 कस्टमर और हैं, लेकिन समय अलाउ नहीं कर रहा है. ले लीजिए ना, क्वेश्चन ले लेते हैं. ले लें क्या? ठीक है. हाँ, ले लेते हैं यार. तो अनुपम जी, आपने हैंड रेज किया हुआ है, तो मैं आपको अलाउ कर रहा हूँ. प्लीज आप अपना क्वेश्चन पूछिए. अनुपम जी, ठीक है. विशाल जी, आपने भी हैंड रेज किया हुआ है, मैं आपको अलाउ कर दिया हूँ पूछने के लिए. प्लीज आप क्वेश्चन पूछिए. मोहन कुमार जी, आपने भी हैंड रेज किया हुआ था, मैंने आपको भी अलाउ कर दिया है, तो प्लीज आप अपना क्वेश्चन पूछिए. The Nifty PE touches 27. Should we come out of the market investments? Hello? Yeah, I can hear you. I did not follow your question, sir. Sorry. Sir, if Nifty PE touches 27, by any chance in the coming months, should we come out of the market investments? 100%, sir. 100%. The day you see 27 ka P in Nifty 50, that is the time for you to book profits. I mean, this is what we essentially do.
So that is the time to book profits and be in some of the debt funds for the time being, because market gives you opportunity every 2 to 3 years. Yeah. You see some or the other thing, because world is changing very fast. Yes, sir. And you see some troubles coming from here and there, like this Okay. tariff war. Nobody ever expected this 4 years back or 3 years Yeah. back. So Okay. जब भी अगर 27 से 30 के जोन पे जाता है, तो उस Okay. समय प्रॉफिट बुक करना है और डेट में बैठ जाना है. Yeah. So our stop loss should be about 25, 26 then. Yes, 26 onwards. You are right. 27 is a very good number, by the way. And because क्या होगा? See, this will now create a new zone, which is between 22 to 23. Okay. Because of the earnings will start improving from next year onwards. Okay, sir. Okay. So that is the time you keep observing, and the moment it goes beyond 25, 26, that's an alarm situation for you to book profits. And the moment it crosses 27, I think it's the time to book profits and be in other asset classes like gold, etc. Okay, sir. Okay, sir. I'll take your guidance. Thank you. Thank you. अनुपम जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? आपने अपने को अनम्यूट तो किया है. हेलो, गुड इवनिंग विकास जी. Good evening, sir. विकास जी, कैन वी रिलाई ऑन गवर्नमेंट डाटा अबाउट इन्फ्लेशन एंड जीडीपी? देखिए, बिल्कुल इसमें अब वो ऐसी सिचुएशन नहीं रही है. ग्राउंड रियलिटी में तो ऐसा लगता नहीं है सर. मैं भी बिजनेस करता हूँ, तो ग्राउंड पे मैं देख रहा हूँ, तो मेरे को तो नहीं लगता है सर कि ये डाटा एक्चुअल होगा. मैनिपुलेशन हर जगह तो मैनिपुलेशन है सर. या प्लीज गो अहेड, सॉरी टू इंटरप्ट. हर जगह तो मैनिपुलेशन है सर. ठीक है, तो ऐसा करेगा सर, आप किसी दिन रात को 12 बजे उठ के कोई हाईवे पे जाइए आसपास और नंबर ऑफ ट्रक्स कैलकुलेट करिए 1 घंटे में. और अपने 10 साल पहले के जीवन का नंबर ऑफ ट्रक्स का भी आप याद करिएगा, कितने मार्केट में है, कितने थे उस टाइम पे. और अगर आपको आंसर उसमें डबल मिलता है, ट्रिपल मिलता है, 4 टाइम्स मिलता है, मतलब समझ जाना सर, इकोनॉमी इज ग्रोइंग. देखिए, गवर्नमेंट का डेटा मैनिपुलेट कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हो सकता है. क्या द आंसर इज यस, यू आर राइट, जोक्स अपार्ट. कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ हो सकता है, चेंजेस हो. लेकिन यू हैव international organization like IMF, which is very much closer to their predictions most of the time, most of the country that they cover, and they cover to an extent of going deep dive, to an extent of meeting the local team, meeting the local regulators, understanding the methodology of the calculation, and then they arriving to the point. Yes. तो अभी क्या है ना, ग्लोबल संस्थाओं का भी इंडिया में इन्वॉल्वमेंट बढ़ गया है इस तरह की चीजों को ट्रेस करने के लिए. तो ये जो नंबर्स आ रहे हैं, ये मोर और लेस 10% ऊपर नीचे आप पकड़ के चलो, ज्यादा से ज्यादा अगर हेर फेर हो सकता है. क्योंकि सर 6.5 से वो जीडीपी कम दिखाई नहीं रहा है, जबकि लार्ज केस कंपनियां परफॉर्म ही नहीं कर रही हैं पिछले 3 साल से. मैं आपको बताता हूँ सर, आप क्या करो, सबसे बढ़िया आपके पास में फॉर्मूला आ गया है, जीएसटी कलेक्शन जाके देखो आप. ये जीएसटी कौन दे रहा है, कौन अपने जेब से टैक्स कटवाने के लिए मर रहा है इंडिया में. लेकिन आप जीएसटी कैलकुलेशन देख लेंगे, मैं आपको समझाता हूँ. मान लो अभी 2 लाख करोड़ का जीएसटी कलेक्शन आया है जी, ठीक है. जीएसटी कितना होता है? एवरेज 15% का होता है. ओके. तो 200 लाख करोड़ मतलब 15% है ना. तो आप इसमें लगा लीजिए कि 100% कितना होगा. तो मोटा मोटी अगर अपना आएगा, अगर तो ये होगा 15%. अगर 200 लाख करोड़ है तो 7 गुना 1200, 1400 लाख, 1300-1400 लाख करोड़ का धंधा हुआ है इंडिया के अंदर. तो 1300-1400 लाख करोड़ का अगर धंधा हुआ है, तो इसको आप अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्चुअल आपको जीडीपी का नंबर निकल के आ जाएगा सर. तो अब तो आसान हो गया. पहले क्या था, स्टेट गवर्नमेंट तो पता नहीं चलता था. अब तो और आसान हो गया है कि आप इंडिया का ग्रोथ पकड़ सकते कि 200 लाख करोड़ कोई जेब से क्यों कटाएगा भाई जबरदस्ती का. तो इससे आपको पता चल जाएगा इंडिया ग्रो कर रही है. एक्चुअली में विकास जी क्या होता है कि
ग्राउंड रियलिटी में ये सब चीजें समझ नहीं आती है। जैसे आप इन्फ्लेशन का बोल रहे हैं कि कम हो गया है, पर दिखता नहीं है सर बाजार में कहीं कुछ। नहीं, मैं वो अग्री करता हूँ आपकी बात पे कि जो उसके जो कंपोनेंट है ना, उसमें रिवीजन नहीं हुआ है। फूड इन्फ्लेशन का आप अगर कंपोनेंट देखते हैं कि क्या क्या आइटम वो लोग फूड इन्फ्लेशन में लेते हैं, तो वो नंबर नहीं हुआ। बट नंबर तो पॉइंट टू पॉइंट ही है ना। अगर वो बढ़े थे तो उसी पे ही बढ़े थे, हाँ, यस यस यस, और घटे थे तो उस पे भी एग्जैक्टली घटे थे। तो एग्जैक्टली। मेरा पॉइंट ये है कि इन्फ्लेशन कुछ एरिया में कम हुआ है, और कुछ एरिया में जैसे एजुकेशन में काफी बढ़ता हुआ दिखा है। तो ऐसा होता है कि ये नंबर जो है वो रिवीजन होने चाहिए। जैसे अभी फूड इन्फ्लेशन में इन्होंने बोला भाई चावल है, दाल है, कॉर्न है, पल्स में अपना लेंटिस है, बीन्स है, चिकपीस है, मिलिट्री में दूध है, चीज है। ये लोग का पूरा कॉम्बिनेशन स्पाइसेस का करके ये लोग एक इन्फ्लेशन नंबर निकालते हैं। तो विकास जी, हम आने वाले समय में रिटर्न की उम्मीद कम रखें फिर? इन्फ्लेशन यदि कम है तो रिटर्न भी फिर कम ही आएगा, या ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा। देखिए साहब कि हमारा जो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ, नॉमिनल जीडीपी मैंने आपको बताया कि हाँ 6.5% की ग्रोथ, और ओके, एक समय पे हमारा 6.5% का इन्फ्लेशन होता था, आपको याद होगा। हाँ तो हाँ सब तो बोलते थे भाई 13% है, तो हमको इक्विटी मार्केट से 15% का रिटर्न चाहिए साहब, है ना, कि हाँ, सही बात। हम ओके, उनको बीट कर सकते। अब क्या हाँ हुआ है कि इन्फ्लेशन नंबर कम हो गया है और जीडीपी नंबर भी 7.5% था, फॉर योर इंफॉर्मेशन, विच हैज कम डाउन टू 6.5%। तो हाँ ये हो गया 9.5% के आसपास, 9-9.5% का इन्फ्लेशन। तो हाँ, फिर आपकी जो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए इक्विटी से, वो 12 होनी चाहिए। 11-12। हाँ, बट हमारी एक्सपेक्टेशन बनी हुई है 18-20 की, क्योंकि पिछले 5 सालों में 18-20% का रिटर्न देखने को मिला है। तो जिसके वजह से वो मिसमैच हो रहा है, और जिसके वजह से थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट आ रहा है मार्केट के अंदर। तो एज वी मूव अहेड, आपने जो यू राइटली सेड कि जो हमने ग्रोथ देखा पिछले 5 सालों में कोविड में, वो कहीं ना कहीं अभी कंसोलिडेट हो रहा है, और दोबारा जो नया बिग बुल रन मिलेगा उसमें अभी समय लगेगा, 1-2 साल, जब तक कि हाँ, आपको अपनी रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन थोड़ी कम रखनी चाहिए। नहीं हमारी तो ऑलरेडी कम है सर, हमारी पीएमएस वालों ने ऑलरेडी कम करवा के रखी हुई है। वो इतनी आदत डाल चुके हैं कि हम 8-9% में ही सेटिस्फाई हो जाते हैं। सो थैंक यू विकास जी, और थैंक यू मैं अपने दर्शकों से भी कहना चाहता हूँ जो हमसे जुड़े इस सेशन के लिए और इतना समय दिया। तो थैंक यू वेरी मच।